ओके, सो लेट्स कंटिन्यू। एको, मैं आपको याद दिला देता हूँ क्या था। एको वाज द फिनोमेना ऑफ रेपिटेशन ऑफ साउंड बाय द सोर्स रिफ्लेक्शन की वजह से। तो फॉर एग्जांपल देयर इज दिस वॉल एंड देन लेट्स से वी आर स्टैंडिंग हियर। ओके, सो अगर कोई वॉइस प्रोड्यूस होती है, लाइक लेट्स सी हमें यहाँ पे एक स्पीकर है, सो विल गेट अ वॉइस थ्रू द स्पीकर एंड वन थ्रू द रिफ्लेक्शन। इफ हमें दो डिफरेंट टाइम इंटरवल्स में आ रही है दोनों रेस, ये दोनों की दोनों साउंड वेव्स दोनों डिफरेंट टाइम इंटरवल्स पे है, तो हमें सेम आवाज दो बार सुनाई देगी इवन दो इट इज कमिंग फ्रॉम द सेम सोर्स। ओके, दिस इज व्हाट हैपेंस। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग इज कि हमारी दिस हैपेंस मोर लाइकली because everything will produce echo, but it happens specifically with some things. For example, अभी तुम्हें मेरी वॉइस की echo नहीं आ रही है, ठीक है? There's a reason for it, and let's try to understand that reason. So let's say we have a sound producing, ठीक है? ये source है of sound, and this is us, ठीक है? Now we process sounds by 1/10 of a second. ओके, दिस मीन्स कि अगर आपको कोई साउंड सुनाई दे रही है, ठीक है, एंड वो साउंड चेंज होती है, तो कितनी जल्दी चेंजेस आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे? 1/10 ऑफ अ सेकंड। सो 1/10 ऑफ अ सेकंड में अगर साउंड में कोई भी चेंजेस होते हैं तो आप यू कैन रिकॉग्नाइज इट। लेस देन दैट यू कैन नॉट रिकॉग्नाइज इट। सो जब साउंड सोर्स प्रोड्यूस होती है एंड देन वो वापस हम तक आती है, ठीक है, तो इन टू वेज इट कैन कम। लेट्स से हियर इज द वॉल, this is the particular distance. If the speed of sound is 344 meter per second, can you calculate this distance? Try. Try to calculate the minimum distance जिससे आपको echo सुनाई देगी, ठीक है? The concept is very simple कि आपके sound reflect होके वापस आई एंड इन दोनों के बीच में टाइम का गैप कितना होना चाहिए? 1/10 ऑफ सेकेंड। तो 1/10 ऑफ सेकेंड टाइम के सर गैप में 17.2 मीटर। 17.2 मीटर्स। ओके, और सब भी ट्राई करो। मतलब अगर तुम लोग को याद है तो लिख के क्वेश्चन करो कंप्लीट, याद करके मत बताओ। यू हैव टू सॉल्व इट ऑब्वियसली। सर स्पीड ऑफ साउंड सर, लेकिन क्या कैसे लेना चाहिए? मतलब सर मतलब कि सर अगर मेंशन ना किया हो तो सर कौन सी स्पीड लेनी चाहिए सर, 340 की 340? द थिंग इज मोर प्रिसाइजली 344 ही ले लो। बट इफ यू वांट टू सिंप्लीफाई, डिपेंडिंग अपॉन द कैलकुलेशंस कैसी है उस पर देख लेना। बट टेक 344 इन दिस पर्टिकुलर केस। और जनरली दिया होगा, नहीं दिया होगा तो 344 ले लो, या कैलकुलेशन इजी कर रहा है आपकी अगर 340 तो 340 ले लो। थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा आंसर में। अच्छा, लिसन टू दिस। तो टोटल साउंड वेव को डिस्टेंस कितना कवर करना है? लेट्स से दिस डिस्टेंस इज डी, बोला है ना हमने। तो ये यहाँ पे गया, वॉल से टकराया and वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा उसने? 2D। सो डिस्टेंस इज 2D। टाइम कितना है हमारे पास? 1/10 ऑफ अ सेकेंड, है ना? सो एंड स्पीड कितनी है? 344 मीटर पर सेकेंड। हमें पता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड यहाँ पे है 344 इज इक्वल्स टू डिस्टेंस 2D डिवाइड बाय टाइम कितना है? 1/10। सो दिस इज 1/10। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, तो वी हैव 344 इंटू 1/10, यहाँ डिवाइड हो रहा था उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है डिवाइड हो जाएगा, इक्वल टू डी। सो वी हैव 2 1 2 2 7 14 17.2। सो डी इज इक्वल टू 17.2 मीटर्स। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट आपसे सिर्फ और सिर्फ 17.2 मीटर्स से ज्यादा दूर है तभी आप एको सुन सकते हो, वरना एको सुननी पॉसिबल ही नहीं है। बिकॉज योर ब्रेन वुड नॉट रजिस्टर इवन इफ द साउंड्स आर कमिंग फ्रॉम विद अ लैग ऑफ सम like 1/10 of a second. So that is echo. Okay. Now the reason मैंने तुम्हें solve करा rather than learn कराने के is because you can do this all the time. Like echo जब आपको करना है, जब भी लिखना है minimum distance, you can easily calculate it. You don't need to learn that number, but याद कर लो तो और अच्छा है। Minimum distance 17.2.
let's see applications of ये लिख लिया ना सबने लिख लिया ओके एक सेकंड applications of reflection of sound. Okay, so let's see. सबसे पहला megaphone. So you might have seen something like this. Now this is not a digital one, bear in mind. Digital one भी होते हैं, but I'm talking about a simple construction of a megaphone. जो कुछ ऐसा दिखता है. So there is a sound source here. ठीक है, जो generally आप इसके सामने जाके बोल रहे होते हो कुछ. And what happens is due to multiple reflections of sound, this sound is amplified. ओके इसका मतलब समझ के देखते हैं. नाउ अगर डायरेक्टली आप बोल रहे होते सो योर साउंड वुड बी स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शंस. सो लेट्स से यू आर डायरेक्टली स्पीकिंग लाइक दिस. नाउ योर साउंड वुड स्कैटर इन रैंडम डायरेक्शंस. सो सिंस ये आप सोर्स है तो ये हर डायरेक्शन में साउंड वेव्स जा रही है आपकी. व्हाट दिस मेगाफोन विल डू इज कॉन्सेंट्रेट दैट इनटू अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिससे आपकी वॉल्यूम एक डायरेक्शन में ज्यादा आएगी. दैट इज द रीजन कि आप मेगाफोन के सामने हो तो आपको ज्यादा आवाज आएगी, अगर उसके पीछे हो तो यू विल नॉट हियर एट अ नॉर्मल वॉइस, नॉट दैट मच ऑफ अ वॉल्यूम डिफरेंस. ओके, सो दिस इज इंक्रीजिंग द एम्पलीट्यूड ऑफ इट. एंड एनी ऑफ द नॉर्मल एक्सपेरिमेंट जो आप करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप एक लॉन्ग ट्यूब में एक साइड से बोलते हो एंड देन समवन एल्स इज ट्राइंग टू लिसन टू दैट, then also it is an application of the same thing. Also, have you noticed this was one of the things, maybe you have done this experiment in junior classes or something. You take a cup, like an inverted cup, or maybe like a rubber tube. So एक ball को half में cut करके उससे एक thread लगाई and then दूसरी side दूसरी ball लगाई and then when you speak in this दूसरा इंसान यहाँ से सुन सकता है. But the main thing was कि this thread should be tight enough. ठीक है, the reason for it कि vibrations carry forward हो पाए. अगर मैं ऐसे किसी लूज रखूंगा इस वायर को, लेट्स से दिस वायर इज लूज, तो क्या होगा कि जहां पे भी सरफेस के साथ कांटेक्ट में आ रही है वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे वाइब्रेशंस बेसिकली इट विल लूज व्हाट, इट विल लूज इट्स एनर्जी ऑन दैट प्लेसेस. तो इट्स इंपॉर्टेंट कि ये टाइट रहे. बट इट इज आल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ साउंड एंड दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड या फिर इज ग्रेटर इन सॉलिड्स. So since thread is a solid, तो इसमें sound ज़्यादा आराम से travel कर पाता है compared to air in general. Okay. Now this is one of the applications of reflection of sound used as a megaphone to amplify source sound. Let's take a look at another example. So hearing aid is also one of the examples of reflection of sound. But let's take more general ones. So stethoscope. Now this is something जो सबने देखा होगा लाइफ में, and maybe you have used, maybe you haven't used. It's a simple construction कि वो आपकी heart beat सुनने के लिए most of the time use होता है. कभी कभी और भी जगह use होता है, लेकिन generally heart beat सुनने के लिए commonly use होता है. Its construction is simple. There is a suction cup and kind of like a suction cup, not exactly a suction cup, and it is attached to a tube in which multiple reflection of sound takes place, and then it is transferred to the earpiece. So somewhat like this. Okay, and then इसके अंदर क्या हो रहा होता है, there is multiple reflections of sound, and then these reflections travel through this pipe, and eventually the doctor is able to hear it. सर एक चीज पूछना था. बोलो. सर वो कप वाला है सर, थ्रेड वाला, अगर उसके बीच में सर अगर नॉट होगा सर तो उससे सर साउंड लूज हो जाएगी, मतलब एनर्जी. The thing is, knot would not be that much of a problem, but knot can be a problem. The thing is कि अगर आप thread, अगर दो चीजों की बात करो मैं, this is the thickness and this is the thickness. Now vibrating this is easy, this is not easy with the same energy. Obviously क्योंकि पतली चीज ज्यादा अच्छे से vibrate कर पाएगी. So knot basically increases the thickness at one point. So it's not the knot is not the problem. अगर wire भी uneven है, मतलब एक जगह thickness कम है ज्यादा है, तो भी वो properly sound नहीं propagate कर पाएगी.
But the thing is, yeah, not would create a problem in it. ठीक है? नॉट से कोई delay आ सकता है? Yeah, कोई delay आ सकता है नॉट से? delay नहीं आएगा, no, not delay at all. Okay. Yeah, and then some concert hall ceilings. So ठीक है. So अगर आपने कभी ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन देखा हो तो let me know. जब so a lot of ceilings are curved. Now the ceilings are curved in a particular way so that the sound produced from the source reaches all points. So basically, this is what you want it to do, reaches the audience. That's why it's curved. Curved nahi hogi, so there would be there would be varied reflections and then not that much of a pleasant sound experience. सर हम साउंड को एम कर सकते हैं? Aim in the sense, लाइक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हम उसको, जैसे अगर मेगाफोन है, लाइक सर मेगाफोन को हम मूव कर सकते हैं ना कि अगर हमें इस डायरेक्शन में हाँ, like obviously, yeah, you can. The thing is, there's something cinematography में अगर आप movies देखते हो तो have you ever wanted जो इतने दूर के shots होते हैं तो movies में उनकी आवाज कहाँ से आ रही होती है? They don't really like अलग से तो रिकॉर्ड करेंगे नहीं हर बार. So what they use is something called directional mics. So directional mics are specifically made to catch sound from coming from a particular direction. And shotgun mic बोलते हैं उन्हें because वो बहुत दूर की आवाज बहुत precisely एक particular direction में सुन सकती है. So sound is obviously directed in particular direction and it can be even amplified and heard. And there is a lot of sound engineering going on. So yeah, it is a form of energy and बहुत सारा वर्क इस पे हो रखा है. हम इतनी डिटेल में बात नहीं करेंगे इसकी, but a lot of it is done. So yeah, this is surround sound. And then आपके घरों में जो Dolby Atmos, the main surround sound experience जो आप सबके कभी ना कभी लाइफ में देखा होगा, that is made use of all these things. So वो एक quick scan लेता है आपके room का and surroundings का, and on the basis of that it can create a perfectly home theater environment. For example, the thing is left, all of the 3D sound is made on the factor that you can precisely listen to sounds. So even if you close your eyes and if I'm walking towards you, you'll know that I'm walking towards you without even seeing, because we have a effect, 3D effect of sound. It's not like कि हमें sound थोड़ी सुनाई देती. ठीक है? So if something moves behind my head to front of my head, I can feel it through sound, not just eyes. So we have a 3D sense of sound, and that is what these movie experiences explore. Okay. ठीक है, that is all for reflection of sound. You should be able to cover a little bit of this कि क्या क्या uses हो सकते हैं and stuff. I have given you a few of them. Now let's talk about reverberation. So let's write the definition first. Phenomena of persistence or prolongation of audible sound after the source has stopped emitting sound is called reverberation. And इस टाइम को हम बोलेंगे टाइम taken या time the sound persists until it becomes inaudible is called reverberation time. Okay.
सर अगर डिफरेंस पूछ लिया एको और रिवर्बरेशन में तो क्या लिखेंगे? echo is just reverberation and echo में बहुत ज़्यादा difference है because the thing is let's say we started a sound, ठीक है, let's say a ringing of a bell, ठीक है, so अगर एक बेल रिंग कर रही है एंड आपको ये दूसरी जगह मान लो बिकॉज ऑफ द वॉल यू कैन लिसन टू दिस बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड एंड देयर इज अ सर्टेन गैप इन इट, बहुत दूर है तो उससे आपको दो जगह से आवाज आ रही है उसकी सेम, सो दीज आर टू डिफरेंट वॉइसेस, ठीक है, मतलब दीज आर टू डिफरेंट साउंड्स, वन रिफ्लेक्टेड वन केम डायरेक्टली टू यू, सो आप डिफरेंस फील कर पा रहे हो उसमें, तो यू कॉल दैट एको ऑफ द साउंड, ठीक है, इट्स कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन। रिवर्बरेशन ऑन द अदर हैंड इज सिंपली इस सेम सोर्स से अगर मान लो बेल स्टॉप हो गई, ठीक है, बट दिस रिंगिंग pertains for a few like a few seconds, थोड़े टाइम के लिए still we can listen to it, so that is reverberation, very different concepts। ठीक है, तुमने रिवर्बरेशन सुना होगा लाइक थोड़े इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह आप कोई भी सुनते हो तो जो लास्ट नोट है उसका अगर वो मूव करता रहे, लाइक I think this is a better class with some musical instrument, but yeah. So reverberation is simply जब आप कोई नोट को persist करता सुनते हो. For example, if I'm speaking right now and like is there echo in this room? No, no echo. But my voice still pertains. There is a reverb in my voice, by the way. There is a reverb that is because of voice modulation. Okay, if I stop with speaking, like मैं तुम्हें बोल के दिखाता हूँ, like I'm just teaching you the phenomena of persistence or prolongation of audible, so this is like normal speech of voice because I'm saying जो last word है मेरा that is giving a little bit of, it is pertaining to a little bit of, if I stop that is when I do not use reverberation। तो voice modulation में भी reverb बहुत important होता है। The thing is human voice में reverberation इतनी छोटी होती है कि differentiate करना कभी कभी मुश्किल हो जाती है, लेकिन जो लोग slow बोलते हैं उनके लिए बहुत जरूरी होती है reverberation, ठीक है, if you they would not necessarily notice or know about the concept but we ourselves use this, ठीक है, तो आप अगर ध्यान दो तो जब आप कोई words बोल रहे होते हो between the words what you are doing is you are differentiating them, but at the last syllable you literally like if you notice तुम थोड़ा stretch करते हो उसको, that is when you understand कि there is something that has stopped। Get my point? Full stop को हमें determine करना आता है, बोलना आता है naturally because we are listening to that in such a way, okay, but reverberation would more logically be explained through musical instruments, so maybe I'll play you some clip or something, maybe in the next class you'll understand the difference। Anyways, so that is reverberation, but sometimes we need to also stop this because होगा क्या कि in a room where there is no like windows or something, something like auditoriums, what would happen is due to reflection of sound, your reverberation would be a lot, and you don't want that. For example, if I'm speaking and there are multiple echoes, I want it to stop. So what would happen in such case, we will use some use sound absorbing materials। This is jab undesirable reverberation. There are sometimes that is desirable, sometimes it's undesirable. So use sound absorbing materials. There are a lot of materials that are sound absorbing. Then there are also some different like holes in the जितने walls में holes होते हैं छोटे छोटे, तो wooden walls होते हैं उसमें छोटे छोटे holes होते हैं, that is also made for sound absorbing। आपने कभी स्टूडियोज वगैरह देखे उसमें एक ब्लैक मटेरियल लगा होता है हर जगह, दैट इज बेसिकली टू, हाँ, तो that is basically to absorb that sound absorbing materials because in a studio you do not want the sound, your mic is already recording, you don't want the reflections to be there, okay। अगर आपने कभी माइक में कंडेंसर लगा हुआ देखा है, so that is also, condenser is for a different purpose, that is because जो आपकी breath होती है ना वो ना लगे, तो if I use a very good mic and the moment I'm inhaling and exhaling वो बहुत ज्यादा noticeable होगा उस mic पे, if I use a condenser then it will not be audible। So a lot of things you will be more interested in them and you will study more about them if you go in to music theory or sound engineering on something, but other than that I don't think you will be using that much। सर बोलो। ये वाली लाइट में रिफ्लेक्शन आ रही है। Okay।
चलो ये क्वेश्चन देखते हैं. So let's say we take a man. Okay. Let's say I fire a bullet. अब तो मैं कर नहीं सकता बिकॉज तुम लीगली अलाउड नहीं हो, मैं भी नहीं हूँ, बट व्हाई नॉट. So I fire a bullet. So this shot, first shot, after traveling a distance, let's say this is the cliff. यहाँ पे cliff है, mountain top, which is at a distance of. So अभी मुझे पता नहीं किस distance पे. And here's it from a cliff after 2 seconds. So अगर मैं इस point को A लूँ, and then दूसरी point को let's call this point as B. So it went from A to B and then back to A, है ना. तभी तो उसे आवाज आई एको. तो इसमें टाइम कितना लगा टोटल. सो डिस्टेंस इस केस में था 2 times AB एंड टाइम इस केस में क्या था 2 seconds. नेक्स्ट ही वॉक्स 85 meters टूवर्ड्स द क्लिफ. सो अगर डिस्टेंस लेते हैं पूरा x होता तो उसने पहले 2x ट्रेवल करा. अब वो 85 मीटर, अब मैं चल के थोड़ा सा आगे गया, बाल खड़े होने चाहिए. हाँ, इस पॉइंट को लेते हैं C. ओके, ये कितना डिस्टेंस है. दिस इज 85 meters चला है मैंने यहाँ से यहाँ तक, 85 meters. ओके, नाउ 85 meters चलने के बाद सेकंड शॉट इज हर्ड एंड 1.4 सेकंड. तो उसके बाद सेकंड शॉट में रेस गई, रेस वापस आई. तो लेट्स से सेकंड शॉट ट्रैवल दिस डिस्टेंस, केम बैक. ये डिस्टेंस कितना हुआ टोटल. x minus 85. सो वी हैव x minus 85 और ये वापस भी आया तो इंटू 2 डिस्टेंस एंड टाइम कितना है 1.4 seconds. ठीक है. सो स्पीड ले लेते हैं हम. स्पीड इज इक्वल्स टू क्या होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना. एंड सिंस साउंड की स्पीड तो एयर में ही है तो चेंज थोड़ी होगी, यहाँ पे भी स्पीड v रहेगी, विच इज इक्वल्स टू डिस्टेंस 2x minus 85 into 2 is, बोलो, सर 170. 120 डिवाइड सर बाय आंसर निकल गया वैसे. 1.4. गुड गुड, देखते हैं. तो 1.4. सो इस की जरूरत नहीं यहाँ पे. दोनों की वैल्यू, दोनों v को इक्वेट कर देते हैं. तो वी हैव 2x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2x minus 170 डिवाइड बाय 1.4. सो 2 से 2 कट गया. 1.4x ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया हमने, इक्वल टू 2x minus 170. सो 2x minus 1.4x equal to 170. We have 0.6x equal to 170. So x कितना आ गया. x is equals to 170 divided by 3 होगा. एक सेकेंड, 0.7x नहीं हुआ. एक सेकेंड रुको, एक सेकेंड. He walks 85 kilometer. What is the velocity and how far the man from the cliff when he heard the first shot? So पहले में तो distance is equals to, yeah, तो v is equals to 2d by 2. So v equal to dr. Okay, then we took second shot का distance d minus 85. So we have 2d minus 170 and इसमें टाइम कितना लगा 1.5 seconds. सॉरी नहीं, 1.4 है. सर आंसर मेरा सर 283.3 बार आ रहा है. बुक में गलत दे रखा Statistics. है. हाँ, सो दिस इज 170 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा 6 by 10. So we have 1700 divided by 6. तो x कितना आ गया 1700 divided by 6, which is पॉइंट्स में कितना आ रहे हैं सर 283.3 में. 283.3. चेक करो और सब भी मैंने तो कर लिया था पहले बोला. यही आ रहा है 283.3.
ठीक है. सो सिंस डिस्टेंस कितना है x के इक्वल विच इज 283.3 एंड हमें पता है वेलोसिटी इज आल्सो इक्वल टू x. सो डिस्टेंस भी आपके पास इनिशियल डिस्टेंस वो कितनी दूर था क्लिफ से वो भी आ गया 283.3 मीटर्स. एंड जो इनिशियल स्पीड थी वो भी सरप्राइजिंगली 283 सॉरी 283.3 मीटर पर सेकेंड. ओके. सो या दिस इज हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन. एक और ट्राई करोगे? ये लिख लो फिर एक और ट्राई करना. A person clapped his hands near a cliff and heard the echo after 5 seconds. तो टाइम दे रखी है टोटल हमें 5 seconds. What is the distance of the cliff from the person at the speed of sound? Speed कितनी है? 346 मीटर पर सेकेंड. डिस्टेंस क्योंकि ये जाके वापस आएगा तो 2 times d ले लेते हैं. So v is equals to 2d divided by t. This implies 346 equal to 2d divided by 5. So we have 212, 2714, 236 and then into multiply 5 कर देते हैं. 3 5 15, 7 5 35, so 36 and 717 plus 3 3 8 865 meters. Okay, pretty simple. तो साउंड में तुम्हें ऐसे कुछ न्यूमेरिकल्स आएंगे. सर बस क्या? बस हाँ मतलब ऐसे ही. अभी इससे पहले वाला जो करा था वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था. फॉर्मूला यही रहेगा, कॉन्सेप्ट यही रहेगा. इनफैक्ट तुम जो सोनार की क्वेश्चंस करोगे ना, सोनार पढ़ेंगे उसमें भी ये सेम फॉर्मूला रहेगा. सोनार ओमिटेड है तुम्हारा आ रहा है. ठीक है फिर तो करा देता हूँ. बस कोई one very important thing. Even with the common belief that अगर जो मोटा है उसकी आवाज ज्यादा like decibels में नहीं, ऐसा नहीं होता. Depends. अगर if someone is able to like the thing is it's dependent कि लैंडस्लाइड होने के अवलांच होने के चांसेस कितने हैं, कितनी लूज है स्नो, आप बहुत सारी चीजें हैं. मतलब ऐसे नहीं बोल सकते हैं डायरेक्टली. Well, then you have to run. You will a lot of people can die in avalanche, by the way. That is because even though you just feel like it's snowing to hai, but enough snow over your head you cannot breathe. You will die of suffocation. And it's not water कि तुम swim करके ऊपर आ जाओ. Does not happen. सॉलिड है सर. It's like अगर water भी है तो think of it कि तुम्हें swimming नहीं आती और तुम बीच में bottom में फंसे हो. Like you cannot go up even if you try, and you cannot shout because that is इसका scary thing. And that is something अगर किसी को skiing का शौक है तो उन्हें पता होगा. मेरे को नाइट में आती है. So there is a audible frequency. तो मान लेते हैं हमारे पास ये 3 gaps है. And let me denote a wave so that you understand कि हो क्या रहा है. And the higher frequencies, then lower, and then finally very low frequency. So this is the highest frequency range. This is audible range. Audible frequency range for humans. Humans ये frequency range सुन सकते हैं, which is from 220 hertz to 20 kilohertz, which is 20,000 hertz. Okay, ये frequency range हमें सुनाई देती है. इसके ऊपर वाले सबको हम बोलते हैं अल्ट्रासोनिक, sorry, ultra sound, and then इससे नीचे वाले सारे infrasound. Okay, so there are a lot of animals which can hear this infrasound and ultrasound, but we can only hear this particular frequency. अभी infrasound के कोई applications I cannot think of, and I do not know of any applications of infrasound, but I do know some infrasounds which are like, for example, earthquakes produce infrasounds. So जो आप बोलते हो ना कि काफी लोग बोलते हैं कि एनिमल्स में सिक्स सेंस होती है, वो सिक्स सेंस नहीं, वो साउंड ही है, बस तुम्हें सुनाई नहीं देती है वो साउंड. That is not a sixth sense.
The thing is, they can detect earthquake because their frequency response is better than us. So they can listen to those frequency and know कि earthquakes आ रहे हैं ऐसा क्यों? for that. Because हमारी capacity नहीं है, हम evolve ही नहीं करे उसके लिए. Evolution ही देता है ना सबको frequency, तो हम नहीं है. सर मतलब हम उनसे ज्यादा वो नहीं कर रहे हो तो हमारे पास एक कोई नहीं है. The evolution does not really matter कि आप different animals are good in different things. Like तुम चीता से भागने में तो नहीं जीत पाओगे ना. So मतलब yeah, so everything, like we are intelligent, we are delicate but intelligent. So human is a very delicate species, but we are intelligent. Like मैंने तुम्हें पहले भी example दिया था कि biting off your fingers is as easy as biting off a carrot. You do not do that because obviously you will be sick if you do that. But the thing is, we are very delicate. The only power these hold is on our brains. So that's it. Anyways, so ultrasound के काफी सारे applications होते हैं. One of which is commonly known as ultrasound. तो आप लोगों ने सबने सुना होगा ultrasound के बारे में. And the thing is कि it's ultrasound is good. The particular reason is कि with higher frequency you can concentrate a beam of it. Beam of it मतलब directionally आप ऐसे send कर सकते हो, which is very useful. So let's see some industrial use of ultrasound. One of this industrial uses. Ultrasound समझ आएगा ना सबको? Frequencies, sound with frequencies over 20 kilohertz. That's the definition of ultrasound. सर 20 किलोहर्ट्ज पे अल्ट्रासाउंड में आएगा. क्या? 20 हर्ट्ज पे अल्ट्रासाउंड में आएगा. 20 hertz नहीं 20 hertz तो हमारी ऑडिबल रेंज में है. 20 hertz से नीचे इंफ्रासाउंड, 20 किलोहर्ट्ज से ऊपर, किलोहर्ट्ज से ऊपर 20,000 हर्ट्ज पे अल्ट्रासाउंड है. नो उससे ऊपर 20,000 से हम सुन सकते हैं. नाउ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. इट इज टेलिंग कि 20 से 20,000 हर्ट्ज तक ह्यूमन सुन सकते हैं, डज नॉट मीन आप सुन सकते हैं. अ लॉट ऑफ एडल्ट्स कैन नॉट लिसन ओवर 15,000 16,000 हर्ट्ज. एंड बच्चों में ज्यादा मतलब विद एज और हाँ सेंसिटिविटी हमारी कम हो जाती है इनफैक्ट विद एज. So probably आप लोग मेरे से ज्यादा frequency response सुन पाओगे. If you ever want to test it out, just watch a YouTube video. And you will after a moment find कि maybe 18,000 के बाद अगर तुम्हारी बहुत अच्छे कान है कि हमें तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा, well that is कि तुम respond नहीं कर सकते उस frequency, right? मजा आया. तेरे कितनी आई थी? हाँ सर, सबसे पहले ऐसे ट्राई कर रखा है सर. I also tried. My came out somewhere around 16, but that was a year ago, so I'm not sure. 16 के बाद I could not hear. And also after 15, the voice like became very faint. Even though the volume was same throughout, but higher frequency ranges में आपको बहुत कम सुनाई लगने लगता है because your ear is not that sensitive. Understand, these are all vibrations. So it's not detecting something is vibrating that fast. It's not able to detect that. And obviously vibrating fast means a lot of energy too. So even if you do not realize it. Now there are ultrasound on the other hand has a lot of uses. It can be categorized. Let's make a chart to understand the uses. Okay. Okay, so let's see. Ultrasound के applications लिखेंगे. So let's see the applications. You can write down with me, but when I'm screening, तब सुन लेना. So we are studying applications. Of ultrasound. We have industrial. We have medical. And we have communication. सर वो इंडस्ट्रियल में आता है ना सर, जो क्या बोलते हैं मेटल से डस्ट हटाते हैं. Dust. क्रैक बताते हैं कि Crack बताते हैं, हाँ. So industrial में you'll have uses like plastic welding is one of the uses given. Plastic welding. समझाता हूँ. Then defecting flaws in metal blocks. Detecting flaws, cracks
and metal blocks. Okay. Medical echocardiography. Ultrasonography. Yep. Uses in it. Surgical uses. It's even used in some therapeutic uses. Communication, we know sonar. Sonar stands for sound navigation. And tree engine. चलो एक एक डिस्कस करते हैं. So plastic welding, let's try to understand. Now ultrasound, sound is a form of energy. So ultrasound क्या create करता है? Thermal energy create करता है that is enough to weld plastic. So it's basically like आप जैसे किसी चीज को weld कैसे करते हो? Through heat, through high temperature heat. But plastic welding requires a very low temperature, so it can be welded through ultrasound. And precise welding में use हो सकता है because we can obviously obtain a beam of ultrasound. Next is detecting flaw and cracks in metal blocks. So basically, इसका मैं आपको diagram से समझा देता हूँ. So let's say we have a metal block and it has some crack. So basically और जितनी भी ultrasonic rays होंगी, डिटेक्टर है यहाँ पे, मान लेते हैं डिटेक्टर है एंड देन सर वो सेम स्पीड पे पहुंचेगी बट सर वहां पे जो क्रैक होगा सर वहां से मतलब डिस्टॉर्ट हो जाएगी. Yeah, that would be disturbed and it might reach at a in like थोड़ी time बाद interval बाद because crack will obviously change the medium. So to change in medium, sound speed will change. So if you can very precisely measure the speed of sound, and obviously since it is a high frequency, you can precisely measure it, so you can detect the cracks in metal pieces. This is very important because in some things, some precision equipment, you need to make sure that there are no cracks inside it because it might compromise your structural integrity. So yeah. Cleaning of वो भी तो होगा. The cleaning of instruments. Yeah, cleaning of instruments भी use होता है कभी. Okay. Echocardiography पता है वो क्या होती है? Echocardiography is heart, yeah. Heart की image होती है basically. That is through ultrasound, reflection of ultrasound. Ultrasound सबको पता ही है क्या होता है. So that is something you must have come across. Surgical uses, some of the like brain surgeries में use होता है कभी-कभी किसी brain surgery में. And therapeutic uses में pain relief के लिए use होता है कभी-कभी. The thing is, it is a form of energy, and then it is about brain surgery, bloodless brain surgery. Exactly what happens is something even I don't know right now. So maybe if you want to discuss some precisely discuss कर सकते हैं, like I'm not know exactly how does that work in surgeries and stuff. Okay, so yeah, that is your chapter basically. बोलो. नहीं क्यों? Oh, you have a good point. You have a good point. Is this correct? This should be infrasound and this should be ultrasound. This is ultrasound because इसकी frequency ज़्यादा है. And this is infrasound. And then 20 वहाँ पे हर्ट्ज भी चेंज हो जाएगा सर. वहाँ पे जो आप लिख रखे हो सर 20 किलोहर्ट्ज सर.
This is 20 hertz. And this is 20 kilohertz. Okay. So that's it in your chapter. We have discussed everything. If you ever get a numerical related to sonar, sonar is basically sonar, sound navigation and ranging. This is used in water. So like pani mein aap distance find karne ke liye of water bed or maybe some objects beneath it, you use sonar. So maybe they use everything can use sonar obviously, but it is basically to see कि seabed कितने दूर है या फिर कुछ article आप ढूंढ रहे हो तो उसमें that is what you are using sound. Bats also use technically sonar or sound reflection to see objects around it. So bat is another example of it. It uses sound. Okay.